Hello students, in today's class we have completed question number 13. Now question number 14 is same as question number 13. In question number 14 what they have given you, find the least number which must be subtracted from 7581 to obtain a perfect square. Find this perfect square and its square root. That means this number is not a perfect square. So we have to find out the perfect square. Now for this, what you are going to do, first of all, we will find out the square root of 7581 by long division method. So you will write by long division method, you will find out the square root 7581. You will mark the period 75 and 81. Now 75. So you will start from number 1. 1 1 ja 1, 2 2 ja 4, 3 3 ja 9, 4 4 ja 16, 5 5 ja 25, 6 6 ja 36, 7 7 ja 49, 8 8 ja 64, 9 9 ja 81. So I cannot take 81 here. So I have to take 8. 8 ja 64. So here my remainder will be 1 1. Now 8 plus 8 will be 16. Now you cannot subtract, now 11 is not going in the table of 16. So I have to take 81 down. Now 1181 is given, and in 16 you have to add digits so that it can either it will completely divide it, or we want the less number than 1181. So let's do. Suppose if I take 163 3 जा, लास्ट डिजिट जो भी लास्ट डिजिट आप ले रहे हो उसी डिजिट से आपको मल्टीप्लाई करना है और ऐड भी करना है. 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 4, 489 is smaller. So 169, let's take 169 into 9, so it will become 9 9 ja 81, 9 6 ja 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62. Then 9 1 ja 9 plus 6 will be 15. Now 1521 is bigger than 1181. So we will not take this. Let's take 168. 168. 8 8 ja 64. 8 6 ja 48. 48 plus 6 will be 49, 50, 51, 52, 53, 54. 8 1 ja 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1344. Now you cannot take this also. So we will take 167 7 ja. 7 7 ja 49. 6 7 ja 42. 42 plus 4 will be 46. 7 1 ja 7 and plus 4 will be 11. So 1169 we can take. So you will write 167 7 ja 1169. So it will become 1 and 11 minus 9 will be 2. 12 is the remainder. Now you cannot divide it further. So the least number that you are going to subtract from 7581 is 12. And when we subtract 12 from 7581, we will get our next perfect square. This is not a perfect square, but we want to make it a perfect square. And how you are going to make it? Whatever number you are getting, you have to subtract it. Why you are subtracting? Why you are not adding? Because in the question
they have given you that what must be subtracted. Okay, so we will write therefore 12 must be subtracted from 7581. So 7581 minus 12 equals to what will be your answer? 7569 will be your answer. Okay, now you have to find out the square root also, because they have asked you. What they have asked you? That find the perfect square and its square root. So the perfect square, whether it is a perfect square or not, that you have to find out. So you will write therefore square root of 7569 is again 8 8 just 64, 1169, 1169, 7 times it is coming, so 7. My remainder is 0, and when my remainder is 0, that means this is a perfect square. And what is the square root of 7569? 87. Is it clear? Now let's do next question. Question number 15. Find the least number which must be added. Now here added is given. That means you have to add some number. Find the least number which must be added to 6203 to obtain a perfect square. That means it is proved that 6203 is not a perfect square. That's why they have asked you to make it a perfect square. Find the perfect square and its square root. Again, for this you will find out the square root by long division method. So, by long division method, (6,203). Eight 8 ja 64 and 7 7 ja 49. So 7 7 ja 49 I will take now 1 3. 13 will not go. So I have to take 0 3 down. Now you will recite the 14's table, 14 and then you have to add some more digits. Suppose if I take 7, so 147 multiplied by 7, 7 7 ja 49, 7 4 ja 28, 28 plus 4 will be 32, and here 7 1 ja 7, 8 9 10, 1029. Let's try 148, 148 8 ja. 8 8 ja 64, 8 4 ja 32, 32 plus 6 will be 38, 8 1 ja 8, 9 10 11. Okay, 1184. Let's try 149 also. 9 9 ja 81, 9 4 ja 36, 37 38, 39 40, 41 42, 43 44. 9 1 ja 9 plus 4 will be 13. 1341 is more than 1303. So I have to take 148 8 ja, that is 1184. Now when we subtract it, 13 minus 4 will be 9, 9 minus 8 will be 1, 1. Okay, 119 is coming. Now students, if in the question
it was given that find the least number which must be subtracted. अगर subtracted दिया होता तो आप क्या करते, जो भी रिमाइंडर आता आपका उसको आप इसमें से subtract कर देते, जो हमने क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में किया है. बट इन दिस क्वेश्चन व्हाट दे हैव आस्क्ड यू कि आपको 6203 में ऐड करना है. That means I have to add something to 6203 to make it a perfect square. आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. ठीक है. अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आप 78 स्क्वायर करते हो, लेट्स फाइंड आउट 78 इंटू 78. अगर मैं 78 का स्क्वायर फाइंड आउट करती हूँ, मतलब 78 का स्क्वायर जो होगा वो 6203 से छोटा आएगा. ठीक है. बराबर तो हो नहीं सकता. वाई? इक्वल क्यों नहीं हो सकता? अगर इक्वल होता तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता, ये परफेक्ट स्क्वायर माना जाता. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, 78 इंटू 78 फाइंड आउट करके देखते हैं कि कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है या इक्वल आ रहा है. 8 8 जा 64, 8 7 जा 56, 56 प्लस 6 विल बी 62. Then 8 7 ja again 56, then 7 7 ja 49, 50, 51, 52, 53, 54. So when I add it, it will become 6084. Now 6084 is smaller than 6203. ये छोटा है 6203 से. Yes or no? तो आप यहाँ पर तो कुछ भी नहीं कर सकते हो, मतलब लेस तो करना ही नहीं है, आपको ऐड ही करना है. मतलब 6203 से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए. डैट मीन्स 78 का स्क्वायर फाइंड आउट करने का मतलब ही नहीं है. तो मैं क्या करूँगी, जो 78 के आगे वाला जो नंबर रहेगा डैट इज़ 79, उसका स्क्वायर फाइंड आउट करूँगी. ठीक है. क्योंकि मुझे परफेक्ट स्क्वायर भी चाहिए, तो 79 का स्क्वायर मैं फाइंड आउट करूँगी. तो 79 का स्क्वायर फाइंड आउट करने पर मेरा आंसर आ जाएगा 9 9 जा 81, 7 9 जा 63, 63 प्लस 8 विल बी 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71, 9 7 जा 63, 7 7 जा 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. So my answer will be 6241. What is my answer? 6241. Now this is more than 6203. Yes or no? This is more than 6203. अब कितना ज़्यादा है, that you have to find out. तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा है. 6203. 6241 minus 6203. So my answer will be 11 minus 3. 11 minus 3 will be 8. 8 and 3 minus 0 will be 3. Okay. 38. That means मुझे अगर यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर लाना है तो मुझे यहाँ पर कितना ऐड करना होगा, 38. जब मैं 30, ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया ना, आपका स्क्वायर है. ठीक है. मैंने इसका परफेक्ट स्क्वायर है तो फाइंड आउट किया है, तो ये ही आपका आंसर हो जाएगा. डैट इज़ 6241. ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है. अब मैंने 6203 में क्या ऐड किया कि मेरा आंसर 6241 आ गया. मैंने क्या ऐड किया, 38. ओके. नाउ जो नया हमें परफेक्ट स्क्वायर मिला है वो क्या है, 6241. और उन्होंने आपको स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करने के लिए बोला है, जो नया स्क्वायर मिला है उसका. तो क्या होगा, अभी अभी हमने फाइंड आउट किया 79. अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करके देखना है तो यू कैन फाइंड आउट. ओके. बट इट विल बी 79 ओनली. You can just see whether your answer is right or not by doing long division method. I am explaining you this once again. Okay. In next question I will do. So you will come to know.
ओके।